फिर में हमने यूज़ किया एसुस का H510 इसमें ऑरा सिंक मिल जाता है, जिससे हम इस प्रकार की लाइटें कंट्रोल कर पाते हैं। और साथ ही में हमने इसमें लगाया इंटेल का i5 10400 का प्रोसेसर। ये दोनों का साथ में बहुत अच्छा पेयर अप होता है, जो कि वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। इसमें हमने EVM की 2 स्टिक यूज़ करी है, एक 8 GB के, टोटल 16 GB हम यूज़ करने वाले हैं इसमें। NVMe इसमें EVM के 256 GB की। सभी को पावर देने के लिए आ गया हमारा SMPS 800 वोल्ट का है फ्रॉन्टेक का। सभी को मर्ज करने के बाद हमारा जैसा परफॉर्मेंस निकलने वाला है। तो गाइस सबसे पहले हमने इसमें चला दिया है GTA 5। इसमें GTA 5 बहुत अच्छे से चल पाता है, इसमें कुछ ज़्यादा लैग नहीं देखने को मिलता है, कैजुअल गेमर के लिए बहुत परफेक्ट है। इसके बाद हमने प्रीमियर प्रो में थोड़ी सी एडिटिंग करी स्टॉक वीडियो के साथ। This is my story of returning home. देख लो गाइस एक बार वीडियो। Agera beats killing the music on the track, yeah. गाइस इसमें सारे टैब्स स्मूथली ओपन हो जाते हैं, जैसे ये हमारा i5 10400 है और ये मदरबोर्ड हमारा Asus H510 ME R2.0। सारे टैब्स इसमें स्मूथली खुल जाते हैं, कुछ दिक्कत नहीं आते, छोटे काम भी चुटकियों में कर देता है। Agera beats killing the music on the track, yeah.